Hi guys, welcome back in the another live stream. I hope you guys are doing good. Hi Sana, please suggest me a good broker. I want to trade gold with a capital of $100, a lot size of 0.01. I think you can DM me and I can actually suggest you some good brokers that actually can help you. Um, in opening your lot size plus good withdrawals. So you can just DM me on maybe on the Instagram or maybe on the Discord. I'll help you out on that. This is not activated, but I am about to take this trade. So if this taps into okay, okay, so we'll be planning cells. Why there are no sessions on Tradefluenza? You used to take session every night on Tradefluenza's Discord. Yeah, I used to take, but these days, like, I just try to take on my live stream. So it's a little bit of hectic, when I take the live streams on the both of the Discord. So, but again, I try. All right, so let's see. The stop loss is gonna be around 7, 8, 9, around here, and the take profit is almost be 20 pips down. Something like this. This is gonna be the trade. Hi, hello Divyansh, how are you? Let's see if we can hit the target today. Either it's gonna be the stop loss or the TP. Like we're gonna accept.
Hi Shivam, how are you? Good noon, Sanya. I hope everyone is doing good. Is there any kind of news today, like in the London session for Euro maybe? Because I can see some kind of bullish momentum might hit the stops. Let's see. Today is Thursday, so okay, 12:30 we had a German consumer climate. That is just a yellow folder. And at 6 p.m. we have okay, unemployment claims. All right. आप बाइनांस क्रिप्टो को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करती हो दीदी बता दो कल मेरा फर्स्ट पे आउट आया है यार इट्स सिंपली आप जब वॉलेट पे ऐड करते हो सो अपना आप वॉलेट एड्रेस डालते हो सिंपली एंड अपने जो ट्रस्ट वॉलेट होता है तो उसमें जस्ट आपका जो भी पे आउट आता है तो डायरेक्टली वहीं आ जाता है तो आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल आई जस्ट प्लेस माई जो अभी वॉलेट एड्रेस होता है जब भी मैं पे आउट लेती हूँ and directly it comes into my wallet address USDT गलत लेवल पे शॉर्ट हो गया आपका थोड़ा ऊपर करते तो अच्छा होता लेट्स सी अगर बच गए थोड़े से पिप से इफ वी आर सेव्ड तो देख लेते हैं 2 पिप्स मोर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा लेट्स सी यार अगर आपके पास क्रिप्टो है और आईएनआर चाहिए तो क्या करते हैं If I have crypto, I'll go on any kind of Discord server and I'll exchange crypto like INR in exchange of crypto. Let me know अगर आपको अगर crypto exchange करना है या INR exchange करना है. So we have a personal Discord server where we um exchange everything. Okay, तो fine. Stop loss is about to go. Accepting the stop loss today.
I'll try यार to make a video like that कि उसमें how to actually take the payout and how to take in the crypto. I'll try to make the video on that. थोड़ा सा बचा है, लेट्स सी अगर यहाँ से वापस रिटेज डाउन हो जाता है, लेट्स सी। आज का लेवल देखो एक बार यूरो का। यार अब तो आई एम इन ट्रेड ना ऑलरेडी। अब मैं सेल करूंगा लेकिन आपने पहले ही सेल कर दिया मतलब सब लोग सेलिंग में हैं आज। आजकल यार यूरो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, आई कैन सी दैट लाइक यूरो इज बीइंग टू मच अग्रेसिव दीस डेज। And on the top of that, like the thing that is irritating me is these days is like I'm trying to trade futures as well, and the futures like the interface it's lagging too much, like extremely. Let's see if the market can reverse down from here. मैं भी सेल फिलहाल तो लेकिन देखना पड़ेगा। हाँ, the buys is for the sales for today, but let's see if we can get the closing below this range, we are good to go. अब यूरो आपकी नहीं मेरी सुनता है, नहीं यार दैट्स नॉट ट्रू। अभी भी यूरो इज लॉयल टू मी जिससे भी सीखो यार यूरो तुम। यूरो यूरो हमारे साथ बहुत लॉयल है, हमारी लाइव स्ट्रीम के साथ बहुत लॉयल है। अगर यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया देन इट विल बी ग्रेट। लेट्स सी अगर इसको भी इसने फेल कर दिया, इस वाले का आपको क्लोजिंग हमें बिलो दे दी लाइक दिस, सो वी कैन एक्सपेक्ट। तो यार मैं ना उस पर डालती हूँ, लेट मी पोस्ट ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल बिकॉज यू नो व्हाट आई never ever post anywhere about my live streams. I realize this.
यूरो इज ग्रेट लेकिन कुछ दिनों से बहुत परेशान किया है साइडवेज जोन में। मतलब यार यूरो ना आजकल बहुत, व्हाट आई फील इज यूरो इज बीइंग एक्सट्रीमली एग्रेसिव, टू बी ऑनेस्ट। काफी एग्रेसिव हो रहा है मेरे हिसाब से तो। लेट मी पोस्ट a story as well. Live stream is on. Now I will start posting on the Instagram as well, because like people are unaware actually that I do live streams also. I have like 40 minutes. Okay, cool. देखो भाई, वहीं से रिवर्स हो गया पूरा। रात में पोजीशन ब्रेक इवन थी, एंड आई थिंक दैट टाइम आई बुक्ड माय whole profit in NST USD. Nice, yaar. I'm always happy here when you guys share your analysis and everything. It's really good to see you guys. Boom and came down. लगता है अब घूमने जाना चाहिए कि बाहर, मुझे मंथ एंड भी आ गया है। यस यार, डेफिनेटली। एंड गोल्ड का प्रॉफिट तो भाई, यू गाइस आर प्रो ट्रेडर्स, व्हाट आई कैन सी इज। Maybe I shared the analysis on Discord. हाँ, I saw your analysis actually. मतलब the efforts you guys are putting in is extremely great. बट फ्री की चीजें। यूरोप बिगेन एग्रेसिव क्योंकि उसकी दोस्ती है हो गई है गोल्ड से। यार, इट्स अ गुड थिंग देन। इट्स अ गुड थिंग, इट्स इन माय फेवर इफ यूरो इज फ्रेंड ऑफ गोल्ड। लेट्स सी, इसके नीचे हमें वी नीड अ गुड क्लोजिंग बिलो दिस रेंज एटलीस्ट, so that we can say the trend is in intact.
good closing चाहिए हमें. We need a good closing below this range. 'सान्या, when did you receive your first payout and how much was it? यार मेरा पहला payout था $80 का. It was just $80 payout. 5 minutes is flipping. Flipping is not a good thing for us. We need a good closure below this range. Then only we can say the trend is an intact. YouTube. 'Let's see. Currently, I am in loss. What is Euro doing with me? यार तुम buy position में हो sell position में Euro में? Maybe you don't know I'm cheating and going with other pairs. Of course. भाई यूरो के साथ तुम लॉयल नहीं रहोगे यार. It will be a problem. Okay, sell. Loyal with Euro always. See, the loyal Euro people are making money. So we have to follow anyways. चाहे हमारा SLR है चाहे TPR है, we have to follow it consistently. Let's wait for a good closure below. Sana, did you started trading gold? Yes, actually I started trading gold. A little bit. I'm trying to trade on gold. I'm loyal with the gold जब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाता तब तक. नहीं यार, like, see, everybody has their own edge. Okay, so if you are loyal with your edge, that's a good thing. For example, Neil is good with the gold. So it's good thing for him that he's continuously concentrated on gold. Go on 1 minute. 1 minute is this. Hi Sana, how are you doing? Hi Shubdeep, how are you? I'm good. Let me put a poll like how many are in the favor of sell or buy? 5 minutes is flipping to the upside. Okay.
I'm loyal to NQ Queen. Yeah, we know that. From Euro, you are loyal to NQ. I know that journey. Once I used to hate Euro actually, to be honest. I was like, whoa, what is this kind of pair? But then eventually, okay, four votes for the sell side. First Euro, then gold, then NQ. Yeah, I remember. That's great, but like, so how's it going for you, like, with the NQ? सोन दे देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ग्रेट यार भाई आई एम वेटिंग फॉर दैट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट यूरो इज डूइंग टाइम पास नहीं यार इवेंचुअली इट विल गिव द मूव अभी कंसोलिडेट या यूजुअली अभी न्यूज़ भी है एनवाई सेशन में तो अभी माइट बी कंसोलिडेट हो और एनवाई सेशन में एक मूव आए बड़ा तो इट्स पॉसिबल Sana, which time frame you analyze while taking a trade? I see 1 hour time frame. 1 hour time frame for the levels of my buys कि मैं buy करूँगी या sell करूँगी and the rest I see for the execution 5 minutes. My execution time frame is 5 minutes. भाई हो तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन रही है अभी
Let's see. Sana, if you were not into trading, which profession will you like to be in? Most probably I would be having some kind of business or something. Like, might be I would be continuing with my startup maybe, or something, related to business only. If it will not break 1.15581, then be ready for your SL. It's not normal level. 1.15581. 15581. Okay, so we have 4 minutes. If it closes down here, then we are good to go. Because it has a value area low which needed to break. If not, then it will do your SL. What was your startup? So, basically, I had a startup related to herbal teas or tisane, you can say. So, it's like my concept was like I will directly source it from the farmers because it usually happen because of the middlemen. The quality of the tisane just reduces very low. So, I had that concept get that product to the customers like without like cutting up the middlemen in between. So it's like a blend of flowers, herbs, you can say hibiscus, lavender. You can actually check the page like leafy ritual. It's already there on Instagram maybe. स्टार्टअप का क्या हुआ अरे यार actually I was not able to continue with that because then I shifted to Spain, so after that I totally couldn't concentrate on that, so then I ended up here again because you have to put your all your efforts in that. Okay, it's flipping. 1, okay, 5 minutes is flipping, 15 minutes is flipping. All right, let's see. Still, if he manages to close below this area, the trend would be intact. Abhi filhal, what I can feel is we are having a consolidation, so it's nothing to worry about. We need a good closure below this range. Let's see. मैं भी सेल किया हूँ. What is your level? What is your stop loss level?
Sanya, do you have any brother, sister, or you're the only child? No, I have a bigger sister. So now it might take your SL, not might, but 100%. यार देखते हैं चलो. Whatever it happens, we'll accept it. SL or TP. Big fan. नहीं यार. मैं हूँ फैन फैन तो यार आप लोगों की. बस एक अच्छा सा क्लोजर चाहिए. अगर इसके रेंज के नीचे हमें क्लोजर दिखता है तो लेट्स सी. बट अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है अगेन. हाँ, बॉबी भाई की टेक्निक सीखना है गोल्ड का. काफी उनका लाइव स्ट्रीम देखता हूँ लेकिन उनका टेक्निक सर के ऊपर से जाता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है. यार जो चीज सर के ऊपर से जाती है ना तो वो क्यों सीखनी है भाई. जो चीज समझ में आती है वो सीखो. Don't go in complications. हेलो. हाय चंदर, हाउ आर यू. उनकी चीजें सीखने से ग्रोथ उतना नहीं होगा. हेलो मैम, हर्ष दिस साइड. हाय हर्ष, हाउ आर यू. मतलब यार ये है कि जो तुम्हें चीजें समझ ही ना आए तो उसका पॉइंट ही क्या है ना. प्रोफिट्स तो सभी बना रहे हैं, चीजें तो सबकी चल रही हैं, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा फिर तो वो यूजलेस होगी ना तुम्हारे लिए.
मैम हमको आपसे ट्रेडिंग सीखनी है, कोर्स कैसे लें? यार मेरा मैं 1 अप्रैल से फ्री मेंटरशिप कर रही हूँ, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है सो दे कैन एक्चुअली डीएम मी, सो आई टेल यू द होल डिटेल्स। शिव मिसिंग बिकॉज यू आर योर ओन मेंटोर। सही बात है भाई, यू आर योर ओन मेंटोर। मैम ट्रेड समझाओ एंड आज का एनालिसिस बताओ। एनालिसिस इज सिंपल भाई, यूरो यूएसडी में ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा जो बाइस था 10:30 का, 10:30 का लो ब्रेक हो गया था। दैट वाज द किल जोन, जो हमारा किल जोन में हम ट्रेड लेते हैं। एंड ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी एग्जीक्यूशन की थी अकॉर्डिंग टू द बाइस दैट वाज बेयरिश। दिस वाज द प्योर लॉजिक। इससे ऊपर आई वॉन्ट एक्सप्लेन बिकॉज मुझे सोफिस्टिकेट नहीं करना है चीज़ों को तुम्हारे लिए। सुमन सिंह पता नहीं, लेकिन सबसे मैं कुछ ना कुछ चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे ग्रोथ हो या ना हो, बढ़िया लगता है उनका टेक्निक। ब्रो मे बी यू आर फ्री। यार जितनी तुम ना, पता क्या सीन है, आई फील तुम अपने आप को सोफिस्टिकेट करते हो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर डालकर। तो जितना कम इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखोगे तुम लोग, तो उतना ही ट्रेडिंग में ग्रोथ उतना ज्यादा तेजी से होगा। फ्री मेंटोरशिप प्लीज भाई, तुम डीएम कर देना मुझे, मैं तुम्हें आज एक्चुअली जूम कॉल है हमारी 4 PM अराउंड, तो मुझे आप मैसेज कर देना, आई सेंड यू द लिंक, सो आई गिव यू द डिटेल्स। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर देना। कैंडिड कैप्चर, हाय हेलो हेलो, हाउ आर यू? कर दिया आपको डीएम मैम मैंने, थैंक यू जी। टू लेस इज मोर हियर, सो स्टिक ऑन वन थिंग। एग्जैक्टली, मतलब यार इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत बहुत जगह से मिलेगी, पर द ओनली थिंग इज तुम्हें समझ क्या आ रहा है, एंड तुम कितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा तुम्हें। ट्रेडिंग ग्रोथ में होता ही यही चीज है। ट्रेडिंग हम सोचते हैं ना कि यार ये भी हमें सीख लें, हम वो भी सीख लें, ये भी सीख लें, बट ट्रेडिंग ग्रोथ जो होती है वो कम सीखने से ही होती है। जितना कम आएगा, जितनी कम चीजें करेंगे, जितने कम ट्रेड्स लेंगे, उतना हमें ग्रोथ दिखेगा। लेट्स सी, अगर हमें क्लोजर मिल जाता, बट बहुत ही प्राइस एक्शन अभी इनडिसाइसिव है, बहुत ही विकी प्राइस एक्शन हो चुका है।
Everyone in the end, you will use simple things, but the point is तुम सब बोर होने लगते हो, समझे? यार एग्जैक्टली exactly, हमारा ब्रेन होता है ना कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा होता है कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ है कि हम ये भी सीख लें वो भी सीख लें, तो क्योंकि वो ब्रेन को एक्साइटमेंट लगता है। बट एट द एंड बोरिंग जो चीज़ें हैं जो डेली हमें करनी है वही तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी, नॉट द एक्साइटमेंट वाली चीज़ें जो तुम सीख रहे हो। You just want to use name and label things like SMC। मैं तो यार एक रोज़ाना एक लाइन ही लगाता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए। दैट्स ट्रू, मतलब यार तुम एक चीज़ भी कंसिस्टेंटली कर रहे हो रोज़ तो